आई नेवर थॉट कि मैं आपसे कभी बात करूंगी, आपको यूट्यूब वीडियोस में देखती थी। आई थॉट कि मेरा मन करता था मैं आपसे डायरेक्टली बात करूं, कुछ डाउट्स लेने हैं, तो कभी सोचा ही नहीं था इट्स गोना हैपन इन रियल। बट आपने कर दिया, हाँ जी। आपने मेहनत की, यू स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड फाइनली वी आर डूइंग द पॉडकास्ट. Hi guys, welcome to the another 3 years law podcast. Today we have Ruhani Grover from Haryana. She is the outside Maharashtra student and she scored 116 marks out of 150. And she joined us for the online live classes. So Ruhani, first of all, congratulations. Thank you, sir. And how are you? How are you doing? I'm doing good, sir. How are you doing? I'm also doing great and happy to hear that you scored 116 and finally at least end up with the top 5 law colleges in Maharashtra basically. So wanted to know when you started your preparation for the CET. I was in third year of my graduation. So I think I started around 6 to 7 months before the exam, Okay. maybe around December, January. Okay. But I started getting more serious as the dates were approaching near. Okay. So it took me around 6 to 7 months of 6 to 7 months. Okay. strict preparation. And now you got to know about many more about us. I have been searching about MHCET exam only. So I got to see your videos because you have made videos covering almost every topic concerned with this exam. So I got to know through internet only. Okay. Okay. Great. So before we start the preparation part, quick introduction of yours, like name, which stream you have in your graduation, marks of 10th, 12th. Yeah. So I am Ruhani and I hail from Sirsa, Haryana. I have done my schooling from DAV Centenary Public School. I got 10 CGPA in my 10th standard and 90 percentage in my 12th standard. I have done my 12th standard in commerce stream, and I just got done with my graduation from CMK National PG Girls College. It is affiliated to Chaudhary Devi Lal University. It's situated in Haryana only. I am just awaiting my results. My results are not out yet of graduation. Okay. So now let's jump to the preparation part. How you have a strategize your preparation like throughout a day, like morning may I'll do English, then afternoon I'll do logic, then GK. Was there any such kind of a strategy you had made? And evening you had joined for the evening batch, then evening there is a lecture. So how was the routine basically? जो भी lecture evening में होता था, I used to see the lecture and it's pre-recorded session also. एंड उसके बाद फिर मैं नोट्स प्रिपेयर करती थी एंड देन प्रैक्टिस करती थी क्वेश्चंस जो ई बुक्स में होते थे और जो मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था. So I used to like target 2 subjects in a day. Like one is the subject that I used to do in the morning and another one I used to do in the evening. And current affairs तो regular रहता था through newspaper only. So इस तरीके से मैंने अपनी preparation like till I had my last semester exams, this was the like pattern, and I tried to maintain my consistency in this strategy only. And after my exams, I started giving mocks and sectional tests to check my progress. Otherwise, strategy यही follow करती. Okay, so in morning what subject you used to do and evening which subject? Like for example, I started with English and logical reasoning. So I used to take like a topic in a day, and like I start with a topic in English in the morning, and then 1 day 2 day or say 3 days मैं rigorously उसी टॉपिक को स्टडी करती थी, उसकी प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चंस काफी सारे. फिर शाम को से मैंने लॉजिकल रीजनिंग ले लिया तो उसकी वीडियो देख ली. मनोवर के पोर्टल पे जो भी रिकॉर्डेड सेशंस थे, उसकी बुक्स थे, तो वहां से मैंने प्रैक्टिस किया. टॉपिक टेस्ट भी दे देती थी. सो इस तरीके से मैं करती थी और करंट अफेयर्स का बीच बीच में टाइम निकालती रहती थी बिकॉज इट्स बिट बोरिंग टू डू करंट अफेयर्स इन वन गो. सो थोड़ा न्यूज़पेपर पार्ट्स में जंप में पढ़ती रहती थी, चंक्स में. Okay. So out of these 4 section, English, logic, legal and GK, कौन सा सेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था और कौन सा सेक्शन बहुत वीक था?
और जो वीक था उसके लिए क्या किया आपने? स्ट्रॉन्ग सेक्शन आई थिंक लॉजिक था, because actually I have also prepared for CLAT after my 12th exam. So I ओके was well aware of the subjects and resources और जो topics आने वाले थे. So ओके मुझे exam का idea तो पहले से ही था and I was very clear कि मुझे पढ़ना क्या है. So actually जब मैंने first time sectional test दिए logic के, like before even starting my preparation, मैं easily 25 तक score कर रही थी. सो आई न्यू कि इसमें मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, फिर भी रिकॉल करने के लिए मैंने रिवीजन करी. सो लॉजिक इजी था. नेक्स्ट फिर इंग्लिश था विच वाज फाइन टू मी. अगर एवरेज रहता था तो मैं उसको में स्कोर कर लेती थी सही. एंड टफ था. ओनली करंट अफेयर्स जीके सेक्शन वाज टफ बिकॉज लीगल में भी वी हैड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस एंड it was totally easy for me to go for it because मैंने अपने क्लैट के प्रिपरेशन में इतने ज्यादा वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए थे कि उसमें तो आई यूज्ड टू स्कोर लाइक 27 to 30. आई हैव इवन टच्ड 30 ओके score. So this was, बाकी करंट अफेयर्स वाज बिट डिफिकल्ट टू कीप अप विद. अदरवाइज एमएचसीटी में वैसे स्टैटिक जीके आता है, सो वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज उसका फिर कुछ आइडिया ही नहीं है कि कहाँ से आ सकता है. सो वही डिफिकल्ट था, समझ में नहीं आ रहा था एंड तक आके भी प्रिपेयर करना कैसे है. सो जस्ट वीडियोस देखते थे भी क्या क्या पहले आया हुआ है, और जो आपके 1500 क्वेश्चंस का एक वो है बुकलेट है जिसके अंदर सारे बूस्टर्स टॉपिक्स कवर है. वो ओके मैंने ओके ओके सो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन एनी टाइम एनी मोमेंट ये फीलिंग आई थी कि यार नहीं होगा, डीमोटिवेशन आ रहा है, फीलिंग वेरी जीरो, छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ हुआ था? नेगेटिविटी आई थी? और आई थी तो क्या किया उसके लिए? when I started my preparation, it was going smooth because I had time and I was able to do it. Neither the subjects were new to me, so I could do it. But when I had my semester exams, it was in July itself. Like it ended with the like it ended almost around 30 to 31st July. ओके उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आया बिकॉज सिर्फ 3-4 दिन थे और मैंने कहा कि मतलब कि इट हैज बीन अराउंड 1.5 month, लाइक 1.5 month था जब मेरा बिल्कुल टच खत्म हो गया था. करंट अफेयर्स भी मैंने नहीं देखे थे रोज के बिकॉज मैं ऑल टाइम सेमेस्टर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में थी. सो उस 3 to 4 days में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था. अभी अब मैं क्या करूं, मैंने सोचा कि मैं एग्जाम देती भी नहीं बिकॉज ऐसा था कि सब कुछ छूट चुका था, लिंक भी. बट उस टाइम पे मैंने सोचा कि all I could do is the best because I had to regain my confidence because I have prepared well enough. And I think, many students start very early and still they go for exam. And I have like known the subjects, known the topics for like past 3 to 4 years. So I should go for the exam. And then last जो 4 to 5 days थे उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दिए. लाइक मैंने एक सेक्शन पिक किया इंग्लिश. लाइक मैं इस इंग्लिश में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करूंगी, जितना मतलब मैक्सिमम कट ऑफ जाती है उतना तो लेके आऊंगी इंग्लिश में. जब तक वो आया नहीं, वो उसके सेक्शनल टेस्ट देती रहती थी. इस तरीके से मैंने अपने सब्जेक्ट्स पे थोड़ा सा उनको अच्छे से कवर कर लिया था, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए मेरा सभी सेक्शंस में इंग्लिश में. ओके उस टाइम पे फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस गेन किया, बट अदरवाइज ऐसे था कि मैं पेपर दे नहीं पाऊंगी. ओके सो इन वन लाइन इफ आई आस्क व्हाट वाज योर मोटिवेशन, तो क्या था आपका मोटिवेशन? सो व्हाट यू थिंक, क्या होगा आपका आंसर? Then I want to go to Mumbai or Pune. I want to ओके go in Maharashtra because I had my study in Haryana only, so I wanted to go to a new place, explore it. Also, I have interest in corporate sector, so cities like Mumbai, Pune will definitely add benefit to it, and I want to explore that area. ओके ग्रेट. कमिंग बैक टू द मॉक टेस्ट, आपने फुल लेंथ मॉक, ओवरऑल मॉक कितने लिखे और क्या हाईएस्ट स्कोर था आपका मॉक में? आई गेस मैंने बहुत ज्यादा मॉक नहीं लिखे थे बिकॉज एनालिसिस के बाद 4 to 5 days तो उसको प्रैक्टिस करने में लगता है जो टॉपिक्स वीक रहते थे उन पे. सो I do not remember the number of mocks that I've written, but my score has not been really good. Like the first mock I wrote, it was around 95 if I remember. But Okay. after that, I mean, I do not remember that I have scored over 100 in any mock, and I was disappointed because of that. And in the final exam you scored 116. As I keep on saying, अगर आपका मैन्युअर मॉक में 100 आ रहा है तो 5 मार्क 10 मार्क्स एक्स्ट्रा पकड़ के चलो.
आपके रियल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैन्योर का मॉक वन स्टेप टफ होता ही है कंपेयर टू एक्चुअल एग्जाम, बट ठीक है, ग्रेट. So what do you think, what was any kind of a learning which you think I mean any kind of a learning which you have done from the mock test? What do you think? I mean, it is a like you can check your progress, and that is the best thing of or best lesson that one can get. That you should definitely give mocks, because बहुत अच्छी preparation हो सकती है अगर हम mocks देते हैं तो. Because पूरा एक reality check मिल जाता है कि एक हर section में आप कहाँ weak जा रहे हो और कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है. सो आप वो मेंटेन कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ, उस पर थोड़ी और प्रैक्टिस करके, और जो वीक है आप उसमें भी वही सेक्शंस पकड़ सकते हो, जो वो टॉपिक्स ले सकते हो आप जो आपको लगता है कि इसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हो इजीली. सो सिलेक्टिव तरीके से भी किया जा सकता है कि अगर हमें लगता है कि ये टॉपिक्स हम नहीं अच्छे कर पा रहे हैं तो दूसरे टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं. सो मॉक से आगे के जो प्रिपरेशन के डेज रहते हैं, लाइक 4 to 5 days, वो सॉर्टेड हो जाते हैं, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर विद व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ बिफोर यू गिव योर नेक्स्ट मॉक. सो जब आप एक्चुअल एग्जाम लिखने गए और तो क्या, अगर आप कंपेयर करोगे एक्चुअल एग्जाम को मॉक टेस्ट से, मैन्युअल के मॉक से, तो कितना वो हेल्पफुल था और क्या क्या चीजें आपको सिमिलर लगी? जो एक्चुअल एग्जाम था दैट वाज रियली इजी. मॉक हैज बीन बिट डिफिकल्ट देन दैट. अदर देन दैट इंग्लिश के एक दो कॉम्प्रिहेंशंस तो मॉक वाले ही थे, एंड आई रिमेंबर द एग्जैक्ट आंसर्स टू इट, सो आई वाज लाइक रियली हैप्पी एट दैट टाइम. ये तो बिल्कुल ही सेम आ गए कॉम्प्रिहेंशंस. अच्छा, वो आपने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था. ये कौन से स्लॉट में थे आप? फोर्थ स्लॉट में. फोर्थ स्लॉट, ओके. उसमें एक कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल एग्जैक्ट आया था, एंड आई रिमेंबर कि मैंने इसमें क्या गलत किया था, क्योंकि वो रीसेंट मॉक अटेम्प्ट किया था. And other than that, English was really easy. Like the mocks at Manover has been more difficult. But English has been difficult, but English was really easy. So बस एक comprehension की बहुत help हुई थी, और उससे easy level था तो और easily attempt हो गया exam. ओके ओके, कॉन्फिडेंट बूस्ट हो गया कि ओके, हमने तो टफ लेवल पे पढ़ाई की है, टफ लेवल पे टेस्ट लिखा था, ये तो बहुत इजी आ गया, यहाँ तो अच्छा कर लेंगे. ग्रेट. सो लास्ट क्वेश्चन रूहानी, जितने लोग अपकमिंग ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एस्पिरेंट, उनको क्या टिप्स सजेशन यू वांट टू गिव देम? Tips are very simple, like just take one subject at a time and be consistent with it. Like complete the syllabus, keep practicing it, and most importantly, जो एक चीज मैंने फेस करी है करंट अफेयर्स की, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बिकॉज अदरवाइज वी नो कि क्या सिलेबस की रीच है, क्या लिमिट है, हम वो पढ़ लेते हैं, बट करंट अफेयर्स की बिल्कुल नहीं है. सो न्यूज़पेपर इज द ओनली सॉल्यूशन. देयर इज नथिंग दैट कैन सब्स्टिट्यूट इट, एंड you do not even need anything else to complement it with. It's just enough and very well sufficient to cover anything. So it's very important to keep reading newspaper every day, making notes out of it and revising it. Current affairs are sorted, and otherwise just take your subjects one subject at a time and just keep going with it. Smoothly take one subject and prepare. Don't get panic. थोड़ा जल्दी preparation चालू करो and organized way में prepare करो. Right? Okay. Fine. So all the aspirants who are watching this podcast, I think हर podcast में कुछ ना कुछ different है, and सबकी अपनी story है preparation को लेके. So I hope सबके लिए काफी helpful होगा. And thank you Ruhani coming and sharing your experience here with regards to the preparation. And once again congratulations for your score. Hoping कि आपको आईलेस पुणे या तो फिर जीएलसी मुंबई या दूसरे कॉलेज में एडमिशन फॉर श्योर. टॉप 5 में तो एडमिशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, Thank you so much, sir. या चलो, बाय बाय.